Vikas Aghadi rift is out in the open in the Mahayuti camp as well. There's high drama being witnessed in the state of Maharashtra over the candidature of Nawab Malik. Former Maharashtra minister has been fielded by Ajit Pawar's NCP from Mankhurd Shivaji Nagar seat despite strong opposition from the Bharatiya Janata Party. Nawab Malik spoke exclusively to Times Now and thanked Ajit Pawar for the opportunity. BJP has always went against you, and when your candidature was also announced from Ajit Pawar's faction, are there any kind of discussions which are happening in Mahayuti? Do you think, have you spoken about it to Ajit Pawar? No, I never. He himself said you have to contest from the Shivaji Nagar Mankhurd constituency. So I made my preparation. Then he has given me the order that you go and file the nomination. The ABP form will be sent to the रिटर्निंग ऑफिसर एंड इट वाज सेंट टू देम. सर, अपोजिशन लीडर्स का कहना है जो एमबीए में है कि ये सिर्फ वोट काटने के तरीके हैं. अब जो कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं वो सिर्फ इसीलिए किए गए हैं ताकि वोट कट किया जाए, और ये सब पूरा एक डायनामिक्स खुद ही प्ले आउट कर रहे हैं. किसका वोट काटेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका वोट काटेंगे. मुझे शिवाजी नगर की जनता ने बुलाकर चुनाव लड़वा रही है. आज मेरे नॉमिनेशन में 15-20 हज़ार लोगों का हजूम उमड़ा. सना के भी नॉमिनेशन में बड़ी भीड़ उमड़ी 10-15 हज़ार की. तो वोट काटने वाली भीड़ थी कि जो लोग लड़ने की हैसियत में नहीं हो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. तो जिस तरह से संकट में अजीत पवार पूरी ताकत से खड़े रहे, तो हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि हम अजीत दादा के साथ रहेंगे. हम रहे. आज भी उन्होंने हिम्मत दिखाई. लाख विरोध के बावजूद मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूंसी में. तो मुझे लगता है अजीत पवार एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है वो करता है. So we have some breaking inputs coming in. The question is, rift in Mahayuti as state poll nears is widening. Sana Malik says she is the Mahayuti candidate. She is the daughter of Nawab Malik, has also responded amid the ongoing rift, claiming that the seat was allotted to NCP Ajit Pawar camp and she is the rightful candidate of Mahayuti. She further says she has no clue why the Shinde Sena has put up candidates only against her and her father, Nawab Malik. अनुशक्ति नगर से और मानखुर्द शिवाजी नगर से दोनों जगह से हम घड़ी के चिन्ह पे अजीत दादा पवार की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं. मायावती ने कैंडिडेट दिया है और क्यों दिया है, कैसे दिया है और उनकी हमारे वरिष्ठ नेताओं से क्या बात हुई है उनका हमारी जानकारी नहीं है. लेकिन हम पूरी ताकत से इधर लड़ेंगे और चुन के आएंगे. महायुति का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन हो, आप हो या अविनाश राणे जो मुख्यमंत्री शिंदे के पार्टी का जो धनुष्य बाण पे है, ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है और ये क्यों इतना बेसिकली डिस्कोर्स हो गया, डिस्कॉन्टेंट क्यों डेवलप हो? अभी ये पार्टी के वरिष्ठ तय करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि इधर कैंडिडेट कौन है. महायुति में बीजेपी और शिवसेना एक साथ जुड़ी हुई है, उसमें अजीत दादा भी पार्ट है. लेकिन अजीत दादा ने महायुति के तरफ से क्या उन्होंने डिसाइड किया है या पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे क्या बात हुई, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हुई. पार्टी ने हमारे से क्या बात की हमारे पास उसकी जानकारी है. महायुति के जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही थी तब अनुशक्ति नगर और मानखुर्द शिवाजी नगर को एनसीपी अजीत दादा के लिए छोड़ा गया था. तभी हमारे ऊपर वो नॉमिनेशन के लिए उन्होंने बताया था कि भाई ये हमारी सीट है और आप कैंडिडेट्स हो सकते हो. तो उसकी तैयारी हमने चालू की थी. अभी हम अजीत दादा के गढ़ से लड़ रहे हैं. महायुति ने अपना कैंडिडेट दिया है. अब हम हेल्दी इसको एक कंपटीशन के जैसा लेते हैं और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे. हमारा काम किया हुआ है, लोगों के अंदर हमारा संपर्क है और हम अपने काम के माध्यम से लोगों के साथ वो लोगों के सामने जाके मत मांगते हैं, वोट मांगते हैं. हम पार्टी के नाम पे या कोई युति के नाम पे या कोई गठबंधन के नाम पे वोट नहीं मांगते. हम लोगों के बीच में लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं. मेरे पिताजी को भी मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है. पिछले 5 साल से मैंने कंटिन्यूस लोगों के साथ संपर्क रखा है, उनकी समस्याएं सुनी, उनका काम किया है. तो किसने किसका साथ दिया है और कौन क्या कर रहा है उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते हुए हम अपने काम पे आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सीट पूरी ताकत. All right, Arunil is joining us live on the broadcast. Arunil, the rift is clear now. Although Sana Malik, they're trying to downplay, saying that everything seems to be all right, and the party leadership will take a decision. Well, I was speaking to Nawab Malik now, Swati.
direct question to him that whether he is with Devendra Fadnavis and with CM Shinde, whether they are together. He said, I am only with Ajit Pawar. Fadnavis and CM Shinde are against me, but still we will win. He said that probably these leaders feel that if we do well, if we basically win, it may create problems for CM Shinde and Devendra Fadnavis, and that is why they are against us. Now, if to understand the entire dynamics of this, the permutations and combinations, we need to go back to history as well. It was Nawab Malik making those allegations against Samir Wankhede during the Aryan Khan drugs case. Nawab Malik basically also on one particular day before Diwali made allegations against Devendra Fadnavis' wife. Fadnavis shot back saying that post Diwali, I am going to throw a hydrogen bomb on Nawab Malik. Nawab Malik was equated or linked to Dawood Ibrahim. ED basically got into the investigation. Nawab Malik was arrested, was in jail for around 2 years. As soon as Nawab Malik came out, he could be seen joining the Ajit Pawar camp. Ajit Pawar had joined the Mahayuti camp. But Nawab Malik being with Mahayuti was completely opposed by Devendra Fadnavis. He had shot a letter to CM Shinde as well as to Ajit Pawar as well. Said Nawab Malik cannot be with us. Now also when Nawab Malik filed a candidature with the AB form of Ajit Pawar's NCP, Right. Ashish Shelar, the Mumbai BJP chief, basically said that we cannot support somebody who has supported terrorism in the past. Nawab Malik has basically declined all these allegations and said that I am clean on this. I don't know why these people are against me. So clearly a kind of a friction has developed Right. within the Mahayuti. Now whether this friction will escalate into a furor, that only time will tell. Okay, all right. Arunil, stay on with us. Now, the BJP has made it clear that it will not campaign for Nawab Malik, citing his alleged links with Dawood Ibrahim and his associates. In fact, the BJP announced another candidate on the Mankud Shivajinagar seat, saying Suresh Krishna Patil of the Shiv Sena is the official Mahayuti candidate. Remember, Nawab Malik was a minister in the Maha Vikas Aghadi government. He was arrested in 2022 in a case first registered by the NI against Dawood Ibrahim and his associates. Malik was arrested for allegedly usurping a property in Kurla with alleged help from Dawood Ibrahim's sister. He was granted bail on medical ground in July this year. Due to pressure from the BJP, NCP remained tight-lipped on Malik's candidature till the last day of filing of nominations. Attacking him, the BJP says that the official Mahayuti candidate will defeat those who support terror. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका या अगोदरही देवेंद्रजींनी स्पष्ट केली. मी वारंवार केले, पुन्हा एकदा सांगतोय, नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही. प्रचार करण्याचा विषय येत नाही. आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही. मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा से महायुति के शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार है बुलेट पाटिल. हम वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आदमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे. All right, more breaking inputs coming in. Nawab Malik hits out at the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, says allegations against me are unfair. Nawab Malik goes on to say, I am only with Ajit Pawar. BJP and CM Shinde openly against me. So that's the reaction coming in from Nawab Malik. जिस तरह से हमारा विरोध हो रहा है, बीजेपी खुलेआम बयानबाजी कर रही है, शिंदे साहब उम्मीदवार डाल रहे हैं, तो हमें लगता है ये अपेक्षित था हमें कि जिस तरह से हम लोगों की लोकप्रियता अनुशक्ति नगर में है, या जिस तरह से शिवाजी नगर में लोगों ने मुझे लड़ने के लिए निमंत्रित किया है, तो हमारी जीत पक्की है. कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग जीत ना पाए, कुछ लोगों को लगता है कि इनके जीतने से चीज़ें बदलेगी, स्थानिक लोग भी इसमें शामिल हैं. तो हमें लगता है जो भी हो, हम लोगों को जो भी चुनाव लड़ना है जनता की ताकत पर. इस तरह के बेबुनियाद आरोप पहले भी लगाए, फिर वही हरकतें कर रहे हैं. हमें लगता है मामला न्यायालय में है, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता. लेकिन जितने भी आरोप बेबुनियाद लगाए जाते हैं, हम उससे घबराते नहीं हैं. जो भी आरोप लगाए, जो भी हमारे खिलाफ काम करे,
सारी परिस्थितियों को हम मात देकर चुनाव जीतेंगे। विल यू भी आप रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री शिंदे को दोनों तरह से दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार को पीछे हटाने के लिए विड्रॉ करने के लिए? बिल्कुल नहीं, जो उन्हें करना है करने दीजिए, हम अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने भी ये बोला है कि नवाब मलिक जैसे इंसान के बाजू में हम बैठना नहीं पसंद करेंगे। क्या ये हिस्ट्री की वजह से पूरा हो रहा है? जिस तरीके से जो जेल भी आप गए थे उसके बाद आपको बेल मिली, क्या हिस्ट्री आपको दुख दे रही है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। लड़ना, संघर्ष करना मेरे स्वभाव में है। विपरीत परिस्थितियों को हम मात देकर आगे बढ़ते रहें, चाहे जो विरोध करे, चाहे जो उम्मीदवार खड़ा करे, चुनाव हम जीतेंगे। सारे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं नवाब मलिक की लोकप्रियता से, जन समर्थन से घबराई हुई है। अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन जब जनता साथ में हो तो किसी दल या किसी के आरोप से घबराना नहीं चाहिए। हम पूरी तरह से ताकत से लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। हम अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार हमारे संकट में हमारे साथ खड़े रहे, हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है, जो हमारे साथ खड़ा था हम उनके साथ खड़े रहेंगे। कोई छुप छुप के चीज़ें हमने की नहीं, हम खुलेआम अजीत पवार के साथ थे, हैं और कल भी रहेंगे। कोई हमारा विरोध करे, कोई हमें समर्थन ना दे, कोई उम्मीदवार खड़ा करे, ये सारी परिस्थितियों से हम डरने वाले नहीं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हो या नहीं नवाब भाई, इतना मैं अजीत पवार के साथ हूँ, लोग मेरे खिलाफ हैं। कौन लोग? जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना, मेरे खिलाफ लोग हैं। मैं अजीत पवार के साथ हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। All right, let's go back to Arunil. A very candid conversation, Arunil. Nawab Malik says BJP and CM Shinde are openly against me, and Ajit Pawar backs me. So he's making it very clear about the rift. Well, that is right. We also asked him a very pertinent question, Swati, that whether this has been purposely done by Nawab Malik as well as the Mahayuti to divide to ensure that a certain Hindu votes don't go towards the Vikas Aghadi side. Particularly, this is applicable in the Anushakti Nagar constituency, which has a majority of Hindu vote bank as well. He said that not at all. Since the time I have joined the Mahayuti, basically I have joined Ajit Pawar, not the Mahayuti. Ajit Pawar is with the Mahayuti. I have faced objections from both the corners, be it from CM Shinde's party, CM Shinde himself, or from Devendra Fadnavis as well. We asked him that whether the history between him and Devendra Fadnavis or the history between him and CM Shinde, because CM Shinde had also openly said that I'm never going to sit with a person like Nawab Malik, who is in touch with Dawood Ibrahim, who basically had aligned with Dawood Ibrahim. He said that all these are false allegations against me. I'm confident of winning the elections without the support of the BJP, that is Devendra Fadnavis, or without the support of CM Eknath Shinde as well. Across Maharashtra, the Mahayuti may have presented a united face, but in two constituencies in Mumbai, that is Anushakti Nagar, where Sana Malik is contesting, the daughter of Nawab Malik, and where Nawab Malik himself is contesting against Abu Azmi, a strong Muslim leader from the Samajwadi Party. It seems like the Mahayuti is divided. All right, Arunil, stay on with us. Now, Nawab Malik is the sitting MLA from Anushakti Nagar. He has left the constituency for his daughter to contest. His daughter, Sana Malik, is making poll debut from the constituency on the NCP ticket. But on this seat as well, Shiv Sena of Eknath Shinde has put up a candidate named Avinash Rane. Uddhav Sena has now hit out at both Shiv Sena and Devendra Fadnavis of the Bharatiya Janata Party. Aditya Thackeray trained guns at the Chief Minister, saying he should now answer on his past claims that he would never sit beside someone who has any links with Dawood. Priyanka Chaturvedi has also taken a jibe at the BJP, calling it a party of hypocrisy and lies. नहीं, इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ, ये एकनाथ शिंदे जवाब दे, क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई, भाग के गए थे गुजरात। All right, more breaking inputs coming in. 21 days ahead of Maharashtra elections, the Congress has released its list of star campaigners, and it includes former Congress President Sonia Gandhi,
current Congress President Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, some of the other big names as well of the Congress party like Ashok Gehlot, Sachin Pilot and Bhupesh Baghel feature in this list of star campaigners. So 40 star campaigners on this list of Congress party who will campaign for the party in Maharashtra. Gehlot, Pilot and Baghel also make it to the list. Surjewala and Channi to campaign as well. List of 40 campaigners released ahead of Maharashtra elections. Arunil is joining us on the broadcast with more details. Arunil, if you take a look at some of the names that we have put out, these are all stalwarts of the Congress party. What about the other names? What about prominent names from the state of Maharashtra? Well, that is on the expected lines and it is assumed as well, Swati. But looking at the kind of firepower that the Congress party is pushing in the state of Maharashtra, it looks like they don't want to leave anything to chance. After what happened in Haryana, they were basically tipped favorites as a party to win the elections. The mistakes that probably the Congress party has done over there, they don't want the same mistakes to be repeated in a crucial state like Maharashtra party, a state with 6 different parties at play, 6 prominent parties basically contesting amongst each other, against each other as well. Congress party basically releasing a list of star campaigners, and on the 4th of November, Rahul Gandhi will be reaching Nagpur and Mumbai, the 2 important centers in Maharashtra. They basically will be jointly unveiling the Mahavikas Aghadi manifesto as well. Uddhav Thackeray will be on the dais. Mallikarjun Kharge will also be there, and Sharad Pawar, who has been the main glue between these 2 ideologically different partners, that is Congress and Uddhav Thackre's Shiv Sena, will also be very much present on November 4th when the joint manifesto will be unveiled. Absolutely. Like you said, Congress party does not want to take a chance. The other names like Kanhaiya Kumar, Jignesh Mevani, DK Shivakumar and MB Patil are also there. So Congress party actually leaving nothing to chance. Representation from all the states to make their entry in Maharashtra when it comes to campaigning. So Congress party, like you said, at this point of time does not want to take any chances in Maharashtra. Arunil. Well, certainly, yes. That was also reflected by Akhilesh Yadav, who had directly taken a pot shot at the Congress party, saying that if we had stayed united as an India bloc, the results in Haryana would have been different. The same was reiterated by Uddhav Thackeray Shiv Sena as well. Immediately after the unexpected defeat of the Congress party, Sanjay Raut as well as several leaders from Uddhav Thackre's party, including Priyanka Chaturvedi, took pot shots at the Congress party, saying that at least in Maharashtra remain together. With respect to seat sharing agreements or discussions that are taking place, many reports suggest that differences have come to the fore, particularly between Nana Patole, the Maharashtra Congress chief, and Sanjay Raut. But at least out in the open to the media, the Congress party has tried its best to show a united front with the other 2 key Mahavikas Aghadi partners, that is Sharad Pawar's NCP and Uddhav Thackre's Shiv Sena. But still, the Samajwadi Party and its SP's Maharashtra chief, Abu Azmi, is not satisfied till now. Right. He's been saying that our demands of 12 seats have not been met yet. We have announced candidates on 5 constituencies. That communication has not yet come from Mahavikas. All right, Arunil, thank you very much for getting us all the updates from Maharashtra. We are moving on now.